Hello students, exercise 8.1 question number 7. If cot theta equals 7 by 8, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Number 1. Number 2, cot square theta. Given cot theta equals 7 by 8. Now what? 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. We know that a plus b into a minus b equal a square minus b square. A plus b into a minus b. इधर क्या है? a 1 plus sin theta 1 minus sin theta मतलब a plus b a minus b. इस फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. इधर क्या है? a plus b a minus b. 1 plus sin theta a plus b 1 minus sin theta a minus b. a square minus b square. A square b square. 1 square sin theta whole square. a plus b a minus b. A square minus cos theta whole square. 1 square sin theta whole square sin square theta. 1 minus cos square theta. फॉर्मूला क्या है? sin square theta plus cos square theta इक्वल 1. sin square theta इधर रखने से cos theta इस साइड में क्या हो जाएगा? 1 minus cos theta. और cos theta इधर रखकर sin theta उधर ले जाने से 1 minus sin theta. sin square theta 1 equal 1 minus cos square theta. cos square theta equal 1 minus sin square theta. इस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. 1 minus sin square theta equal क्या होगा? 1 minus sin square theta equal cos square theta. 1 minus sin square theta equal cos square theta. 1 minus cos square theta equal sin square theta. 1 minus cos square theta equal sin square theta. sin theta by cos theta by sin theta equal cot theta. cos theta by sin theta equal cot theta. cos square theta sin square theta. cos theta sin theta whole square. So cos theta by sin theta equal cot theta. cos theta by sin theta cot theta. cot theta equal 7 by 8. Now cot theta equal 7 by 8. 7 square 49, 8 square 64. Number 2, cot square theta. cot theta whole square कितना है? 7 by 8. Cot 7 by 8 whole square 7, 49, 64. Thank you.